दोस्तों, गेम टोन में आप सभी का स्वागत है और आज हम देखेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी के दूसरे डिफरेंट वर्जन्स जो अभी न्यूली लॉन्च हुए हैं, उसके ग्राफिक्स और पीछे वीडियो के एंड में हम गेम प्ले भी देखेंगे उनका। तो आज के वीडियो में लास्ट तक देख रही है ब्लैक सेल कॉल ऑफ ड्यूटी वर्जन सीज़न 3। दोस्तों, गेम टोन के अंदर आज हम देखेंगे कि ये कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर अब नए मैप्स लगाए हुए हैं। नए मैप्स जो है बहुत ही बेहतरीन है। गन शॉट्स, नई गन से 2 नई गन आई है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। और जो ग्राफिक्स इस बार तो इतने बढ़िया बनाए हैं, बहुत ही लाजवाब, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी की जो टीम है बहुत ही मेहनत करती रहती है। इस बार उन्होंने कॉइन्स भी बनाए हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी पॉइंट्स, जो आपके लेवल कंप्लीट होने के बाद आपको ज़्यादा पॉइंट मिल जाते हैं। न्यू ऑपरेटर स्किन्स बनाई हुई है जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन लुक देती है हमारे गेमिंग एक्सपीरियंस के दौरान। जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी ने जो ट्रेलर बनाया है उससे ही पता पड़ जाता है कि गेम का एक्सपीरियंस कितना बढ़िया होने वाला है। उसके एक्शंस, उसके जो ग्राफिक्स है और उसके अंदर जो इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं कुछ अलग ही लेवल के हैं। हम आपको दिखाएंगे लास्ट में कि एक्चुअल गेमिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहता है और गेम का आउटपुट कैसा है। बार सबसे बिगेस्ट चेंज है मैप को जोन वाइज अलग से व्यू दिया गया है, ताकि कोई भी जोन में आप स्विच कर सकते हो एनी टाइम। और दूसरा, जो कॉइन कलेक्शन के लिए ये डिफरेंट ऑटो कलेक्शन भी दिया हुआ है। और इस बार 2 नई गन्स दी है, FGX इम्पेरियम, और ये दूसरी है क्रोनेन स्क्वाल, और वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे भी मार गिराती है, इसलिए बहुत ही अलग तरीके की गन इस बार है। देखते हम वीडियो के अंदर, देखिए वो लॉन्ग डिस्टेंस पे भी वार कर सकती है। और इसमें कलेक्ट कर लेते कॉइन जो आते हैं वो हम तुरंत ही कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए एक्शन बहुत ही अलग तरीके के लेवल पे है इस बार। इस बार का जो सीज़न है उसके अंदर आप ट्रॉफीज़ जो है उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर के अंदर इस बार जो मैप्स है वो काफ़ी डिफरेंट तरीके के हैं, और वो मैं अलग बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से मैप्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। एली, ब्लैक साइट, एग्जिबिट एंड शिपमेंट, ये मैप्स है मेरे गेम टोन के दोस्त के लैंग्वेज में सुननी पड़ेगी। Pranked is a take on team deathmatch where if you don't kill another player fast enough, you'll be killed with an explosion. There's a timer that you can keep an eye on to see how much time you have to kill an enemy before it counts down to 0 and you die. There are also 3 new 6v6 maps, 2 new battle maps, and a new Spec Ops map and raid episode coming later in Season 3. Black Gold in the core 6v6 playlist is the first night map where players have to use their night vision goggles or thermal optics to fight in the Rohan oil inspired maps. Warzone has had a lot of changes implemented in the core mechanics. There's a tempered plate carrier now that upgrades your armor plate carrier to improve your armor's efficiency. These can be found in strongholds and looted as normal in the field. This allows players to equip 2 stronger armor plates down from 3, and each plate counts for 75. Bomb drones have had their damage reduced and will no longer one-hit kill or even down a fully armored player now. The heavy chopper is back and now has unique gas cans that can be collected to initiate takeoff. The gas can spawns will vary between Battle Royale and DMZ. But in Warzone, after you finish a stronghold mission, 1 heavy chopper gas can is rewarded.
Interrogations are now faster, going from 5 seconds to 3, and if the downed player is immediately eliminated after a successful interrogation, there's a grace period where the enemy squad will be pinged at least once. If you keep the interrogated player alive long enough, the pings will happen longer as well. On Ashika Island Resurgence mode, the buy stations have now been increased from 10 to 15 per match. Al Mazrah has also been added as a new map for the Massive Resurgence mode, featuring 150 total players. In Massive Resurgence, all strongholds are disabled, and the weapons found in the ground loot always have attachments. In addition to all these updates, there's a new Gulag map called Black Site that players have to fight to get a chance to redeploy. There's also a new World Series of Warzone coming to Warzone on the 27th of this month. This is only for trios and is an in-game option which follows a new World Series of Warzone rule set, which gets rid of the turreted vehicles, heavy choppers, assimilation, fire sales, jailbreaks, restocks, or Champions Quest. The playlist is open now for practice, but the actual competition will be from April 28th to the 30th, from 10 AM to 2 PM each day. Warzone Ranked is listed to arrive mid-season, most likely in Season 3 Reloaded's update. There's a new faction with specific mission sets now available in DMZ, and you can now barter at buy stations with certain items to get equipment as an exchange system. There's a workbench in DMZ that lets you customize contraband weapons before you enter a match. You can now add or remove attachments based on their specific weapons progressions. You also now have 3 active duty operator slots. The operator you choose to go into a match with will have their own persistent items depending on what you loot. When you die or fail to exfil in a match, that specific operator you used during that match will lose their streaks, gear, and everything, but the other operators won't. There's also a new way to exfil. You can buy a private exfil at a buy station that will activate a separate exfil point that isn't spawned into the match that round. There are 4 new plate carriers: Tempered, Comms, Medic, and Stealth. Tempered will give you 2 stronger armor plates versus 3 plates like in Battle Royale. The Comms plate carrier will give an audio alert when an enemy is nearby and will increase the duration of UAVs. The Medic armor will grant you a faster team and self-revives, and the Stealth armor will keep you from appearing on an enemy radar like the Ghost perk. There are 2 new backpacks, Secure and Scavenger. The Secure backpack will keep your items safe during runs. All items in this backpack will be secured in your inventory for future runs and will not be turned into XP when you extract. These items in your secure backpack will be kept to that specific active operator if they are eliminated in an extraction zone. The Scavenger backpack takes out the 3rd weapon slot in medium to large backpacks and is replaced with additional item slots. You could read the more in-depth patch notes on Activision's blog post if you want to see the specific numbers and adjustments made to weapons and more. How do you feel about Season 3 changes so far? And are you liking the DMZ changes? Let us know. Be sure to stay here at IGN for more Call of Duty Modern Warfare 2 and Warzone news.